Good evening, ladies and gentlemen, and members of the club, and all our Lutf members today. We welcome you all to Springfest. And tonight we have a very special program where we pay homage to an icon, a legend, Lata Mangeshkar ji, the Nightingale of India, who left us recently for her heavenly abode on the 6th of February. Somebody said hello. Today's program is really unique because we will hear different facets of her life, her personality, her work. And, we're going to pay homage to the different aspects of her life through a script which has been stitched together by two very knowledgeable anchors who have researched Lataji's life in great detail. We have with us Ms. Neelam Kohli, our first anchor, who is an interior designer by profession, but is very passionate about music and cinema and has anchored several musical shows and enthralled the audience with her deep knowledge and background research on each of the artists that she covers. Her co-anchor is former taxman and media executive, Ajay Mankotia ji. We welcome you both. Ajay is also a singer and has compared several shows, and his knowledge of music and musicians is almost encyclopedic. And we also have with us a group of amateur singers from various parts of the country and from abroad who will sing some of the iconic songs of Lataji. And I can assure you, you will not be disappointed by the performance of these singers. A surprise to the whole package tonight is a very special guest, and he and his family have been very closely associated with Lataji. And I'm going to keep this a surprise for now, but do stay tuned in till the end to see what the surprise is all about. I would now welcome General Shankar Prasad to say a few words of welcome and invite all our Lut team over. Over to you, General. You're on mute, General. You'll have to unmute yourself. विनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को यहाँ लाने के लिए। राज एंड सीमा, आपका भी बहुत धन्यवाद। लुफ्त का बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ नीलम जी का। नीलम जी, थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ शो में आने की हमें इजाजत दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय मंगकोटिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हम लोगों की इच्छा ये थी कि ये प्रोग्राम लाइव किया जाए और करते भी इसको लाइव, लेकिन वेरी रिसेंटली तक, बहुत थोड़े दिन पहले ही ये कोविड का रेस्ट्रिक्शन समाप्त हुआ, तो हमने इसको सोचा चलिए इसको अभी जूम पर ही करते हैं। लेकिन इस किस्म के प्रोग्राम हम आगे चल के भी लाइव करेंगे अब से, क्योंकि अब पेंडेमिक तकरीबन खत्म हो चुका है, और एक प्रॉपर लिट फेस्ट करेंगे। तो हमारा मिनी लिस्ट फेस्ट था जो कि हमने ऑनलाइन किया है, लेकिन लेटर इन द ईयर, शायद अक्टूबर नवंबर में, हम एक और फुल फ्लेजेड लिट फेस्ट करेंगे, जिसमें हम ऑल दीज इवेंट्स विल बी फिजिकल। ऑफ कोर्स जो हमने पिछले 4-5 साल में किए हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, द ग्रेट सक्सेस। तो इस साल भी हम इसको भी दोबारा करेंगे अक्टूबर नवंबर में, कभी जब भी अच्छा मौका मिलेगा इन फिजिकल फॉर्म। सो सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, एंड सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। विनीता जी, कोई और इंतजार नहीं कर सकता, सबको गाना सुनने की बड़ी बेसब्री हो रही है, तो इसको प्रोग्राम को शुरू कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आने के लिए, एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और जहां हो सकेगा शायद पार्टिसिपेट भी करेंगे। Over to you, Vinita. Yeah, thank you, General. I think I'm not going to waste any more time. Neelam ji, you have your cue, and let's get the show on the road. Thank you so much. Thank you for having us. हमारी बात अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हम
जाने हम कहाँ होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी. Today, as we try to find adjectives to describe the legend that Lataji was, to choose which songs to sing and which to leave out, words completely fail to capture her artistry and her genius. But more than that, she has become a part of our daily life, the keeper of our memories, the chronicler of our life's journey. Her songs have accompanied us when we were infants, and our mothers sang to us. तिम तिम करते तारे ये कहते हैं सारे, सो जा तो है सपनों में नींदिया पुकारे, तिम तिम करते तारे. She roused us with pride for our country. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. It was her voice that expressed our feelings when our hearts filled with romance. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम. When we are sunk in despair, it is her voice that resonates within us. मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई निंदिया, बता दे मैं क्या करूं, मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई निंदिया. And when we stand in prayer, it is her sublime voice that connects us to God. Allah tero naam, Ishwar tero naam, sabko sannati de Bhagavan, Allah tero naam. Emotions have countless shades and unlimited depths. Lataji invested them all with the perfect color and mood. In creative arts, the finishing line cannot remain static. A highly accomplished artist, even with the helping hand of God, just as she or he approaches it at the end of a grueling race, sees it shift further ahead. There is no perfection in creativity. Everything can be improved upon, but Lataji was different. She had breached the finishing line very early in her career and became an earthly embodiment of Goddess Saraswati. She became the personification of perfection. She didn't stop running, even though she ran alone. She just kept updating the definition of perfection. Lataji's was once in a century earthly presence. It was therefore a given that she would become a legend in her lifetime and become the voice. She went beyond music directors, the lyricists. Any tune, any word would be invested with an ethereal attribute. Her genius would ensure it.
We all know about Lataji the singer, but today we will take you on a journey which will focus on her as a human being, because her story is not just about achievement. It's also about struggle and determination and a life led with self-respect and dignity. It's a story that weaves through dusty bylanes of small towns before it reaches the hustle and bustle of Mumbai. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू, कहाँ खत्म. Let's hear it from Chitra Kumar. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम. ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम. If there's one person who molded the Mangeshkar children, it was their father, Dinanath Mangeshkar. He was a trained classical singer who started his own touring company in Sangli in 1918 and was soon acknowledged as the king of Marathi theatre. 150 workers ate at their 13-roomed, double-storied mansion where singers and leading musicians were frequent guests. The girls, dressed traditionally, were not allowed to use makeup except for a kumkum on their forehead and were kept apart from the stage performances except occasionally when they accompanied their father on his tours. The eldest of the 5 Mangeshkar children, baby Lata, was the gang leader of all the nearby children, always raiding the fruit trees or up to some mischief. At home, she was constantly singing and repeating what she heard her father teach his students. Climbing on the kitchen utensil cupboard, she would pester her mother to hear her. And after seeing the Marathi movie Sant Tukaram and K.L. Segal's Devdas, she would perfectly recall the songs and dialogue, assign side roles to her siblings, convert a big pile of cushions to make a stage, and give a spirited performance of acting and singing. K.L. Segal impressed her so much that with the innocence of a 5-year-old, she earnestly told her father she wanted to marry him. Baby Lata loved playing pranks and mimicking others. But if she felt anyone had affronted her, she would be so furious. She would bang her fists against the walls, make a small bundle of her clothes, and walk out saying she was leaving and would never return. Now, naturally, her mother and others in the house would run after her and bring her back. This went on for many months till one day her father happened to be home and quietly forbade anyone from following her.
She kept looking back to see who was coming to pacify her, and when she found no one did, she quietly returned home, and that was the end of those tantrums. One day during a music class, her father stepped out telling a student to practice what he had just taught him. 5-year-old Lata was playing in the gallery. She heard that the pupil was not singing correctly. So she went into the room and demonstrated exactly how it should be sung. Her father heard her, remarked, "Why am I teaching others when there is a gavaiya present in my own house?" And the very next morning, she was woken up at 6, handed a tanpura, and to her delight, her formal training in classical music began. She decided to go to the local school with her cousin. When asked who she was, she proudly declared, "I am Lata Mangeshkar," and impressed the teachers so much with her singing that she was given 11 marks out of 10. The next day, she took her younger sister Asha to school. The teacher refused to let such a small child attend the class, and Lata was so insulted that she swore she would never attend school. And indeed, she never did. Remember the film Anpar, in which the heroine is spurned by her husband because she is illiterate? Lataji poured all her pathos into a song from the film, which now Isha Chauhan will sing. आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। After a few years of training, she insisted to her father that she would also sing at a big utsav being organized in Sholapur, where Dinanathji was the main star. On the big day, she calmly sat on the stage, gave a flawless recital with the utmost confidence. And when it came to her father's turn to start his performance, she put her head on his lap and went off to sleep. After all, she was only 9 years old. But this Pita Putri Jalsa became the talk of the town. Those were golden days, but as time passed, the advent of cinema began to affect the profits of theatre companies. Dinanath decided to make films and produced 5 movies, but they failed so badly that he lost a lot of money. The Sangli house had to be sold, and the family moved to Satara and finally to Pune in 1941. What was worse was that Dinanath began to keep ill health. He was a skilled astrologer and predicted the date and time of his own death in the coming year on 22nd April 1942. He breathed his last. They were burdened with debt. The Pune house had to be sold.
The family moved to a rented accommodation, and things became so bad that household utensils and valuables began to be sold for their survival. Usha was very young and loved collecting small items, so she hid away a small silver itar container and a pandan. Today, they are the most prized possessions of the family because on them are engraved Balwan Sangeet Mandal, the name of Dinanath's touring company, which holds so many treasured memories. Some income was desperately required, but they were not educated, had no experience, and their self respect would not allow them to demean their father's name by asking for financial help from others. There was no time to grieve. Just a month after her father's death, 12-year-old Lataji began to work in Vinayak Rao's Praful pictures on a monthly salary, though she hated acting. The makeup, the flashy clothes, the artificial emoting, and the final indignity. She had to pluck her eyebrows and cut the front of her hair to make her narrow forehead appear broader. But stoically, she continued to work from morning to night. Often there was no money. The family would just have to suffer in silence the pangs of hunger with just roasted chickpeas and a glass of water. A habit she continued even after she was at the peak of her career. It seemed the bubbly, ever-laughing 12-year-old had almost overnight turned 42. She never complained, but one could feel something within her was getting extinguished. Let's hear the next song from Seema Sharma. नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया। आंसुओं में चांद डूबा, रात मुरझाई, आंसुओं में चांद डूबा, रात मुरझाई, जिंदगी में दूर तक फैली है तन्हाई, जो गुजरे हम पे वो कम है, तुम्हारे गम का मौसम है, नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया। नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया। Gradually, the family began to settle down in Kolhapur,
and slowly her playfulness began to return. She would return after a day's grueling work and cycle at full speed on the nearby roads, or play Chor Sipahi or Hututu, or just dance around the house singing at the top of her voice. In 1954, Praful Pictures was making a movie, Badi Ma, in which Lataji also starred, and though there was a big gap, she became friends with its lead actor, Noor Jahan. It was a friendship that was to continue even after Noor Jahan ji shifted to Pakistan after partition. They spoke to each other frequently on the phone, and in 1951, they decided to meet at the Wagah border. When the authorities refused to allow them to cross over, they decided to meet at the zero line and wept and hugged each other, sat on the grass and chatted like long lost friends. This was an opportunity, as she had sung. Lag Ja Gale. Let's hear it from Brinda Seth. Lag ja gale, हंसी रात, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले Lataji would travel by the local train, and while others took a tonga to the studio, which was far away, she would walk both ways, and with the money saved, would buy vegetables so that the family could eat a square meal. Unaware that most studios had a canteen, she herself would remain hungry all day and would eat only once she returned home. Her routine at the studio left her no time to attend classical mehfils. The first expense she made on herself was to buy a radio. Now imagine how broken-hearted she was when the first news she heard on it was that her idol K.L. Sehgal had died. These lyrics of the next song, which was to make her famous, fit the legacy of Sehgal too. Let's hear it from Anita Sharma.
acted in 8 films. In 1947, Lataji decided to give up acting and focus completely on her singing. A colleague introduced her to a producer. She was auditioned, selected, and 2 songs were recorded. The lines of her first Hindi song were prophetically, "Hindustan ke logon, ab to mujhko pehchano." But the film was shelved and Lataji's dreams of becoming a playback singer were shattered. She was then auditioned by the well-known composer, Master Ghulam Haider. But though the film's producer rejected Lataji, saying that her voice was too thin, Ghulam Haider recognized her talent and openly prophesied that this girl would one day rule the singing world. He took her to Bombay Talkies to meet music director Khemchand Prakash, and there she signed her first contract as a singer. Ghulam Haider took her under his wing and taught her the importance of understanding the film's situation and imagining she herself was experiencing the heroine's emotions. Maybe that's why she always maintained that the most important part of a song were its lyrics. And actresses used to always say that more than half their work was done through the way Lataji conveyed the emotions of the song. She learned playback singing techniques from leading music directors like Anil Biswas, who taught her how she should breathe so that the listener could not make out, and her singing sounded seamless and without effort. One day when traveling by local train with Anil Biswas, they met Dilip Kumar. Lataji was introduced to him as a promising new Marathi singer, to which Dilip Saab replied, "Yes, I have heard her and she is good. But Marathi लोगों के बोलों में दाल भात की बू आती है." That very day, Lata requested Mohammad Shafi, Naushad's assistant, to get her an Urdu teacher. Maulana Mehboob was hired to teach her Urdu diction. She learned how much emphasis to place on a word and how to stretch it to give weight to the meaning. Now, this Naat from Mughal-e-Azam shows how the Naat that I'm talking about is "Ae mere mushkil kusha, faryad hai." It perfectly demonstrates her mastery over pronunciation, the clarity of words, the conveying of pathos. Now, in a complete change from the same film, let's hear the defiance Lataji conveys in the next song, sung by Chitra Kumar. इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना
प्यार किया तो डरना क्या. 1949 was the year when at last all Lataji's hopes and aspirations were realized. She was 20 years old, had experienced 9 years of intense struggle, had somehow managed to keep the family together. And now, with this one song of the film Mehel, she was recognized as a fresh new singer of immense talent and never had to look back. Mehel's director, Kamal Amrohi, wanted a new voice for the newcomer actress Madhubala and wanted to have bits of this song repeated through the movie to create an atmosphere of suspense. He asked music director Khemchand Prakash to have the first part of the song appear as though it was being sung from far away. But those days, there were no machines to create an echo sound. So Khemchand ji came up with the experiment of making Lataji walk from a corner of the room, singing the opening lines, and arriving at the mic just as the lines Aega Aane Wala started. It must have been a daunting challenge for a young and new singer, but the final result, as we know, drove the public crazy, just as it does even today, over 70 years later. The song became so popular that people demanded to know who is the singer. The record said Kamini, but that was only the role name of Madhubala in Mehel. All India Radio had to call up Bombay Talkies to identify the singer, and one can only imagine the joy Lataji must have felt when her name was announced over the radio. Presenting this iconic song is Jyotsna Rana. खामोश है ज़माना, चुपचाप है सितारे, आराम से है दुनिया, बेकर दिल के मारे, ऐसे में कोई आहट इस तरह आ रही है, जैसे कि चल रहा हो मन में कोई हमारे, या दिल धड़क रहा हो एक आस के सहारे, आएगा 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 वाला, आएगा आएगा, दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, कोई नहीं चलाता
और तीर चल रहे हैं। क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगी किनारे, क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगी किनारे। लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे, आएगा 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 रे मौला, आएगा आएगा आएगा। By the early 50s, most producers wanted her to sing their songs and would send their emissaries to get dates from her. One day, a handsome young man came to her house saying that Raj Kapoor had sent him to get dates for his film Barsat. Now, Raj Kapoor had already made a few films, was a son of known theatre personality Prithviraj Kapoor, who had been known to her father. And Lataji commented to her family, it seems that not only are all the Kapoors so good looking, even their staff is extraordinarily handsome. Lataji went to the RK office in Mahalakshmi and discovered that the handsome young man was in fact Jai Kishan, the music director. The next song is the first song she sang for them. Anita and Rakesh Sharma will present the song to us. क्या हुआ इकरार हुआ है, क्या दिल क्यों डरता है दिल, क्या हुआ इकरार हुआ है, क्या दिल क्यों डरता है दिल। क्या हुआ इकरार हुआ है, क्या दिल क्यों डरता है दिल। क्या हुआ इकरार हुआ है, क्या दिल क्यों डरता है दिल। Working in studios was not easy those days. There was no air conditioning. They could not switch on the fan as the sound would be picked up by the mic, and the sultry Bombay weather made it even more physically uncomfortable. The whole song would have to be rehearsed with a live orchestra, and if even one musician made a mistake, the complete song would again have to be redone. Furthermore, the whole process would need to be repeated twice, one for the 4-minute version to be played in the film, and once again for the smaller HMV record. But the sanskars of her father were imbibed in Lataji to the core. No matter how many takes were required, she never complained. She treated the recording studio as a temple, would take off her chappals before she entered, and on the top of each page of her music book, she would first write a big Shri before she wrote the music notations. As her success increased and she began to gain popularity, she became so busy that her only regret was that her father never lived to see her success. And yes, there was another lingering regret. Singing even semi-classical songs seemed to give her some comfort, but the dream of becoming a classical singer like her father
remained unfulfilled, but his training allowed her to sing rag-based songs with effortless ease, like the next song from the film Guide, composed by S.D. Burman, which Nilakshi Rai will present. पिया तो से नैना लागे रे, नैना लगे रे, जाने क्या हुआ अब आगे रे, नैना लगे रे, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लगे रे, जाने क्या हुआ अब आगे रे, नैना लगे रे, पिया तो से नैना Nilakshi, unfortunately, is facing a Wi-Fi problem. I'm going to come back here. Oh no, what a shame. All right, but Anyway, let's continue. Filmfare had introduced awards in 1954, and initially the best... Nilakshi, we cannot hear you. I'm so sorry. So we are moving on. Filmfare had introduced awards in 1954, and initially the Best Music Award was given to a particular song. Example, Naushad won the first award in 1954 for Tu Ganga Ki Mauj Main Jamuna Ki Dhara from the film Baiju Bawara. From 1956, the award began to be given to the music directors for the whole album. In 1957, Shankar Jaikishan were told that they would receive the Best Music Director award for the Nargis Raj Kapoor starrer Chori Chori. As was the practice, during the award ceremony, the singer was expected to sing a song from that movie. So Jaikishan requested Lataji to sing Rasik Balma. But Lataji politely refused, saying, "You have been given the award as music directors. They have not given any award to Best Singer or Best Lyricist. So you get your orchestra to play the song during the ceremony." And she was adamant that she would not sing until Filmfare recognized the contribution of playback singers and lyricists. Finally, in 1959, Filmfare introduced Best Lyricist Award, and Lataji won the first Best Singer Award for the wonderful song Aaja Re Pardesi from Madhumati. Such was her devotion to her craft that even then she refused to accept the trophy, saying for her music was worship, and handing her a trophy in the shape of a naked female form was demeaning to music. And it was only after the organizers covered the statuette that she accepted the award. Lataji had very cordial relationships with almost all her producers, music directors, and co-singers. She had many outstanding duets with her co-singers, and I'll give you a glimpse of some of them. With Muhammad Rafi, this duet became very, very popular. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा,
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. With Hemant Kumar, this duet became very, very popular. याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार हो कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम. With Talat Mahmood, this duet from Chaya became very popular. इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूं साथ तेरे कि नाम मेरा जल की धारा. And with, of course, Kishore Kumar, many duets. कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार जिस पे तेरा. She was attached to all her co-singers, but the legendary singer Mukesh ji was her beloved Mukesh Bhaiya, and one of the few people from the film industry who was allowed entry into her home. So we are immeasurably touched that in spite of his total devastation and personal anguish at her loss, Mukesh ji's son, the famous playback singer Nitin Mukesh ji, has agreed to share with us his sentiments and memories as his humble tribute to Lata ji. Nitin Mukesh ji. Namaskar ji. नमस्कार नीलम जी, नमस्कार मनकोटिया साहब, नमस्कार जी. Namaskar to all the wonderful members of the Vasantwadi Club and Lutf, members of Lutf, to whom I'm not a stranger because I have met you on an earlier occasion. But this sad, solemn occasion, I don't know where to start. कहाँ से शुरू करूं? मुझे ये नहीं पता पड़ता, क्योंकि दीदी मेरे पापा को मेरे जन्म से पहले, बल्कि उनकी शादी हुई उससे पहले से जानती थी और मानती थी, अपना भाई मानती थी. और जैसे मैं सुन रहा था उनकी हिस्ट्री का नीलम जी और मनकोटिया जी से, उसमें मैं अपना जो मैं जानता हूँ दीदी के लफ्ज़ों में मैंने सुना है कि लता दीदी को मुकेश भैया पिकअप करते थे उनके घर से और दोनों ट्रेन में साथ जाते थे रिकॉर्डिंग्स के लिए. और सबसे पहला ड्यूएट लता जी ने जो गाया वो पापा के साथ ही था. एक फिल्म थी, फिल्म का नाम मुझे ठीक से याद नहीं आता, अंग्रेजी छोरा चला गया वो गोरा गोरा चला गया. और हमेशा ये याद करती थी दीदी कि मैंने औरों के हिसाब में मुकाबले में शायद कम गीत गाए होंगे मुकेश भैया के साथ, मगर मेरे सबसे दिल को अजीज और सबसे पॉपुलर प्रिय गीत मुकेश भैया के साथ ही थे. ये अजीब इत्तेफाक है कि मुकेश भैया ने जब अपनी सांस छोड़ी तो वो लता दीदी के साथ अमेरिका गाना गाने ही गए थे. मगर उनके जाने के बाद
लता जी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं 25 साल का था और मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि मैं अगले दिन से क्या कर पाऊंगा। I too was not educated enough to do anything uh, otherwise other than singing. उन्होंने मुझे दूसरे ही दिन से मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ थामा, और मुझे कौन सा ऐसा मंच नहीं है जहां अपने संग ले जा करके प्रोग्राम्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया। सबसे पहले तो अमेरिका में 2 शोज बाकी रह गए थे जब पापा चले गए, तो मुझे अगस्त में ये हुआ और दिसंबर में 76 दिसंबर में ही मुझे अपने संग अमेरिका ले गई कि बेटा, मुकेश भैया का कोई भी काम मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहती, तो तू मेरे संग चल, हम वो 2 शोज जाकर कंप्लीट करेंगे, तू मेरे संग गाएगा। और मुझे इतने प्यार से ऑडिटोरियम में, ऑडियंसेस में इंट्रोड्यूस करती थी कि आधी मेरी नर्वसनेस या कहें, या आधी मेरी जो जद्दोजहद थी वो कम हो जाती थी, क्योंकि दीदी, लता दीदी मुझे इंट्रोड्यूस कर रही हैं। ये सोचिए कि तब से लेके लगभग 97-98 तक मैं उनके संग शोज करता रहा। बड़े प्यार से मुझे कहती थी कि नितिन, तुझे मालूम है कि कोई भी मेल सिंगर जो मेरे संग सबसे ज्यादा किसी ने गाया हो तो वो तू ही है स्टेज पे। स्टेज पे मैंने मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्टेज शोज लता दीदी के साथ किए थे। ये उन्हीं का कहना था। मुझे, मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट कहूंगा यही रहेगा। आज चाहे वो 90 साल की थी, 92 साल की थी, चाहे 100 साल की हो जाती, हमारा दिल, किसी हिंदुस्तानी का दिल, किसी संगीत प्रेमी का दिल, ये उनको भूतपूर्व, भूतकाल में याद कर ही नहीं सकता। वर्तमान में हमारे संग जीवित है, भविष्य में हमारे संग जीवित रहेंगी, और हमारे बाद भी लता दीदी निरंतर जीवित रहेंगी, क्योंकि वो साक्षात सरस्वती थी। उनके लिए कुछ कहना या उनकी तारीफ में कहना, आप सुन ही रहे हैं कब से कि उनकी तारीफ तो क्या करूं मैं, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मगर मुझे इतना प्यार करती थी, बेटे की तरह मानती थी, और आज मुझे इतना कष्ट हो रहा है कि आखिरी मैसेज जो मुझे, व्हाट्सएप तो आप समझिए कि पिछले 4 साल 5 साल में रोज व्हाट्सएप उनका आता था। दिन में किसी भी वक्त, रात को देर देर तक व्हाट्सएप आता था, और कभी कभी वॉइस मैसेज भेजती थी कि बेटा तुम ठीक हो ना, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना, ऐसा बुरा वक्त चल रहा है कोविड के दरमियान। उन्होंने इतना हमारी फिक्र की, हमारे लिए सोचा कि पिछले साल जब मेरा परिवार, पूरा परिवार, मेरे बच्चे और मेरे सहित हम कोविड से ग्रस्त हुए सन 21 में, उन्होंने शायद न्यूज में देखा कि नील, नितिन, मुकेश एवं उसके परिवार कोविड से ग्रस्त हैं। तुरंत उनका फोन आया मेरे पे कि बेटा मैं बहुत चिंतित हूँ कि ये सुना कि तुम सबको, तू तू ठीक है ना, क्योंकि मैंने, मेरी उम्र ज्यादा है,
तो उनको मेरी फिक्र बहुत थी। मैंने कहा दीदी भगवान की दया और आपका आशीर्वाद है तो हम सब ठीक हो ही जाएंगे। मगर वो नहीं नहीं, मुकेश भैया जो थे राम भक्त थे। मैं तेरे लिए राम दरबार भेजूंगी, राम जी भेजूंगी, राम जी तेरी रक्षा करेंगे। और मेरे लिए इतना सुंदर सा एक राम दरबार सिल्वर में बनवाया और बोला कि जैसे तेरी तबीयत ठीक होने लगेगी तू मेरे को बोलना, तेरे ड्राइवर को भेजना या किसी को भेजना। मैंने बोला दीदी मैं खुद आऊंगा लेने। बोला, नहीं तुझे मेरी कसम है, तुझे आराम की जरूरत है। तू तू आएगा तो मेरा मन तड़पेगा कि मैं तुझे ऊपर बुलाऊं और तुझे मिलूं, तुझे प्यार करूं। मगर उस वक्त उन्हें भी कोई आइसोलेशन में ही रखते थे क्योंकि उनकी उम्र यूं शी वाज अबव 90 और व्हेन शी टर्न 90 तब एक बार काफी बीमार पड़ी थी। मैं अमेरिका में था, टूर कर रहा था। तो ये कहूंगा कि इतने प्यार से उन्होंने मुझे कहा कि तू बिल्कुल नहीं आएगा, तू किसी को भी भेजना जब ठीक हो जाए। और उस दिन से लेके पूरे 10-15 दिन रोज मुझे फोन आता था किसी भी वक्त, तू ठीक है ना, तू बल्कि तुझे कोई डॉक्टर की जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, मेरे बहुत डॉक्टर्स की पहचान है। कौन उनको नहीं जानता था, कौन लता जी की बात नहीं मानता। मगर मैंने कहा दीदी भगवान की दया से हम ठीक हो रहे हैं और आज आपकी आवाज सुन ली है तो कुछ भी नहीं होगा, हमें किसी को कुछ भी नहीं होगा। और वाकई उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहा। यहाँ तक कि उनका आखिरी मैसेज मुझे 4 जनवरी को आया। 5 को मैंने 4 को तो मैंने उनको जवाब दिया ही, 5 को मैंने उनको व्हाट्सएप किया, कोई जवाब नहीं आया। 6 को दोबारा मैंने किया तो जवाब नहीं आया। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ। मैंने बोला कि ये ये जरूर कुछ ठीक नहीं है कि दीदी का। तो मैंने तुरंत उनकी भांजी को फोन किया, रचना को। रचना ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। 7 तारीख हुई और 8 की सुबह मुझे बताया गया। मैंने टीवी पे भी देखा, मेरे बच्चों ने डरते डरते मुझे बताया कि लता दीदी को कोविड के मारे, निमोनिया के मारे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। 8 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक एक क्षण नहीं होगा कि सारी दुनिया उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी। उनमें से मैं तो एक बहुत मामूली कलाकार हूँ, मगर मैं उनका बेटा, मैं उनके लिए मंगल कामना दुआएं करता, हर मंदिर में फोन करके प्रसाद मंगवाता, उनके लिए प्रार्थना करवाता। और गुजरात में कष्टभंजन देव हनुमान जी के मंदिर में स्वामी जी से बात करता कि स्वामी जी उनके लिए प्रे कीजिए। और फिर रचना को मैसेज भेजता, हनुमान जी की फोटो भेजता। मगर भगवान को कुछ मंजूर और था। देखिए आज पूरे 30 दिन, महीना तो हुआ। अंग्रेजी डेट पकड़ोगे आप तो कल 6 तारीख है, कल 1 महीना पूरा होगा। मगर आज महीना संपूर्ण हुआ कि दीदी को हम कहते हैं कि मैं बात नहीं कर पाया, उनकी आवाज नहीं सुन पाया या उनका मैसेज नहीं पढ़ पाया। मेरे लिए ये असंभव है कि मैं किसी तरह भी कबूल करूं कि वो नहीं है। मेरे लिए वो हमेशा साक्षात रहेंगी। मेरी बहुत सारी यादें हैं, मगर आज की शाम मैं आपको उदास करने नहीं आया हूँ। मैं आपके संग कुछ स्मरण ऐसे शेयर करने आया हूँ। उनके संग उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। दुनिया का कौन सा ऐसा बड़ा स्टेज नहीं है, सिडनी रॉयल ओपेरा हाउस,
रॉयल अल्बर्ट हॉल, पैलेडियम in England, फिर countries all over, whether it was Europe, America, बार West Indies, Suriname, Trinidad, Barbados, Guyana, हर जगह अपने संग ले गई थी. अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, एक छोटा, मैंने नाम भी नहीं सुना था इस देश का, स्वाजीलैंड, वो साउथ अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका के सदर्न मोस्ट टिप पे एक छोटा सा आइलैंड है स्वाजीलैंड, वहां तक भी मुझे ले गई. और लोग ऐसे दीवाने होते थे उनको मात्र देखने. एक किस्सा बताता हूं मैं कि जब मैं उनके संग गयाना गया, गयाना में एयरपोर्ट से लेके होटल जिसमें हम ठहरे थे, वहाँ 60 किलोमीटर्स का रूट था, और 60 किलोमीटर के रूट पे आप मानेंगे कि 60 किलोमीटर के रूट पे दोनों तरफ लोग थे, और कोई रो रहा है, कोई दीदी हमारी तरफ देखिए, दीदी हमारे, कोई गाड़ी के सामने खड़ा हो गया. अल्टीमेटली उनको ओपन एयर कार थी, उसमें वो खड़ी हुई और नमस्कार करती रही. फूल लोग बरसाते रहे. 60 किलोमीटर का दौर जो लगभग आप समझिए घंटा भर में हो जाता, सवा घंटा में हो जाता, हमें 4.5 घंटे लगे. लोगों ने कहा, इट वॉज नोन एज ब्रिटिश गियाना, बोलती क्वीन ऑफ इंग्लैंड आई थी, उसको ऐसा वेलकम नहीं मिला. कोई भी लीडर हिंदुस्तान का आया है, उसको ऐसा वेलकम नहीं मिला जो लता जी को मिला. लोग फूल बरसा रहे हैं उनको देख देख के. आप बताइए मुझे कि कोई हिंदुस्तानी ऐसा है जिसने लगभग 80 साल तक एक्टिवली अपने कला की सेवा की हो. ठीक है, कईयों की जिंदगी इतनी लंबी नहीं थी, मगर जिनकी थी भी वो 80 साल तक नहीं, 80 साल तक टॉप पे रहना, और कोई मुकाबले में था ही नहीं उनके. वैसा कौन कलाकार हो सकता है, कौन हो सकता है? मेरी समझ में, और पता नहीं मेरी समझ, मैं बहुत बुद्धिशाली तो नहीं हूं, मगर मेरी समझ में हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपनी कला की इतने वर्ष सेवा, 8 दशक सेवा की, और इतना प्यार बटोरा. चाहे कोई डॉक्टर हो, लॉयर हो, पॉलिटिशियन हो, संत हो, महात्मा हो, मगर लता दीदी का स्थान कोई नहीं ले सकता. मैं गाकर कुछ सुनाना चाहूंगा. आप कुछ चाहें पूछना तो नीलम जी से आप कहें. मैं एक दो प्रश्न भी उत्तर देना चाहूंगा, मगर मुझे 1-2-3 पंक्तियां सुनाने दीजिए. ना जाने किस जहां में खो गए, तुम ना जाने किस जहां में खो गए. हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए. तुम न जाने किस
जान भी जाती नहीं, मौत भी आती नहीं, जान भी जाती नहीं। दिल को ये क्या हो गया, कोई शय भाती नहीं। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम ना जाने किस जहां में खो गए हम, भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम ना जाने किस जहां में खो गए, तुम ना जाने किस जहां में खो गए। माफ कीजिए, गाना और रोना एक साथ नहीं कर सकता इंसान, सबसे मुश्किल कठिन काम है। तो बीच बीच में अगर मैं भावुक हो जाऊं तो मुझे क्षमा कीजिए, मगर आया हूं अपने दिल की पहली बार कह रहा हूं, 1 महीने बाद। कह ही नहीं सका हूं मैं किसी से। आप सब संगीत प्रेमी हैं और इतने दिल से दीदी को याद कर रहे हैं, इसलिए मैं भी आपके साथ शामिल रहना चाहता हूं। एक गीत जो पापा के संग उन्होंने हाल में ही गाया था, हाल में यानी 50 साल पहले, ऐसे लगता है कल गाया है। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, आना और जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी,
कहानी है, एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है। 4 तारीख को जो मैसेज मुझे आया, यकीन जानिए 5 साल में मुझे मेरे बचपन के फोटो भेजती, पापा के कई सारे डुएट्स के वीडियो क्लिप्स भेजती, और कैसा है बाबा तू, बेटा तेरी याद आ रही है, ये सब मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस भेजती। मगर इत्तेफाकन कभी मुझे उनका और मेरा गाया हुआ गीत नहीं भेजा। ये देखिए, कुदरत के 4 तारीख को जो मैसेज आया वो इस गीत का वीडियो था। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार करने ओ प्यार करने घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार करने घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार करेंगे ओ प्यार करेंगे घड़ी दो घड़ी। ये गीत मेरे जीवन में ना होता तो शायद गुमनामी में खो गया होता। ये मनोज कुमार जी का बेहद प्यार मुकेश जी के प्रति और दीदी का अटूट प्रेम अपने मुकेश भैया के प्रति, दोनों मिलाकर ये शायद मुनासिब हुआ कि मैं ये गीत गाऊं। दीदी बहुत प्यार से मुझे सब म्यूजिक डायरेक्टरों के पास ले जाती रहीं और सबसे कहती रहीं कि ये मुकेश भैया का बेटा है, समझिए मेरा खुद का बेटा है, इसको जितना हो सके एनकरेज कीजिए। तब जाके मुझे ये गीत मिला और थोड़ी बहुत पहचान हुई, मुकेश जी का लायक बेटा कहलाया, दीदी के साथ मंच पर खड़े रहने लायक कहलाया। अंत में मैं चंद लाइनें सुनाना चाहूंगा। चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ,
भी मेहमान थे, घर तो उस पार था, हम सफर एक दिन तो बिछड़ना ही था। अलविदा 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 अलविदा। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। ये घाट तो ये बाट कहीं भूल न हो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत, तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत, तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना। हो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। हो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। हो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। Nitinji, what a wonderful, moving, heartfelt tribute you paid to Lataji. You've bared your soul, you bared your heart by sharing such poignant memories and these iconic songs. And thank you, such a small, inadequate way of expressing our heartfelt gratitude for making Lataji come alive again. We are very, very grateful to you. And we've all been moved to tears by your recollection. And this is one of the most poignant tributes I've come across ever since she moved on. Totally from the heart. Totally from the heart. We've all been crying here. I cannot even imagine what you're going through. But thank you so much. The world will not be the same without her. The world will not be the same. I'm desolate, absolutely inconsolable. I don't know how I'll get over it. I'll have to try. I lost my parents. I lost many dear ones, but her nobody was willing to give up on. I'm not. So she will live as long as फूल खिलेगा बाग में, जब तक गुलाब का प्यारा, जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है
धरती पर लता दीदी नाम तुम्हारा, गंगा में पानी बहेगा, हिमालय जब तक खड़ा रहेगा, तब तक लता दीदी की यादें हमेशा हमेशा बनती रहेंगी। और हमेशा हर एक हिंदुस्तानी, हर एक संगीत प्रेमी, क्यों सिर्फ हिंदुस्तान, सारी विश्व भर में दोबारा लता मंगेशकर जैसी न गायिका आई हैं पहले, न कभी आएंगी। मैं ये कहता हूँ कि वो सदा साक्षात हमारे संग ही रहेंगी। आपके प्रोग्राम में मैंने कहा मैं 5 मिनट के लिए आऊंगा, जाने का जी नहीं चाह रहा था। नीलम जी, मैंने समय से ज्यादा नहीं 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 नहीं, प्लीज दे दिया। आप आए, वो हमारे लिए इतनी बड़ी बात है। और आपने मुझे बताया कि आप कहीं भी नहीं आपने एक्सेप्ट किया है किसी से भी इस बारे में बात अभी करना। तक अभी बात कर ही नहीं पा रहा था मैं, बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मगर क्योंकि मैं आप से पहले ऐसे मुखातिब हो चुका हूँ और आप सबसे मिल चुका हूँ, तो मुझे थोड़ी नर्वसनेस कम हुई। और मुझे अब शुरू करना ही है काम, मुझे जल्द ही प्रोग्राम्स और गाना शुरू ही करना है। कहीं ना कहीं ये कदम उठाना ही पड़ेगा। और आप सब दुआ कीजिए कि दीदी की तरह आप सबका भी प्यार और आशीर्वाद मुकेश परिवार पर यूं ही हमेशा बना रहे। तो आज अब अभी हम मुकेश आपको जी, मैं मुकेश जी का ही गाना सुनाते हैं। नीलम जी, एक मिनट। मुकेश जी, मैं जनरल शंकर प्रसाद बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ वसंत विहार सोसाइटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में मैं प्रोग्राम के घुस रहा हूँ, कहीं आप चले ना जाएं, इसलिए मैं अपने दिल से पूरे वसंत विहार की तरफ से सभी हमारे क्लब के मेंबर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने इस शाम को एक रियली ट्रिब्यूट टू लता मंगेशकर बना दिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी, आई मस्ट थैंक यू बिफोर यू कैन कंटिन्यू, विल कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। पर अगर नितेश जी चले गए तो उनको मैं धन्यवाद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं बीच में घुस गया। और मैं कह रहा हूँ मुकेश, नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं। वी आर मोस्ट ग्रेटफुल टू यू। वी लुक फॉरवर्ड टू इनवाइटिंग यू टू वसंत विहार इन न्यू दिल्ली very soon for a live performance. A large number of members want to see you physically singing before us. Thank you so much. Neeraj ji, over to you again. So Thank you, kind of. Nitin ji. Thank you. I told her that I may go away. I'm not going anywhere from here. I'm going to be here for the rest of the evening. So let's cheer you up, and let's, as you said, none of these legendary people ever leave us because they live with us through our memories and through the songs we've heard. And let's now, I think, hear one song which Mukesh ji sang with Lata ji. And it's from it's the title song of Mere Humsafar. Singing it for us will be Seema and Raj Sharma. किसी राह में, किसी मोड़ पर, किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर। किसी हाल में, किसी बात पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मेरा
तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। All her life, Lata ji strove to ensure that playback artists were given their rights and were treated with dignity. It was because of her attempts that recording companies started to share the royalty earned from sale of records with not just the producers, but also the singers. She had no qualms about giving others their due. Lata ji openly admitted that every singer had their own style. What Asha Bhosle could sing, she could not, perhaps referring to the cabaret songs which were Asha's forte. Lataji's producers were well aware that if there was the slightest double meaning or vulgarity in the lyrics, she would refuse to sing. She was very unhappy with Raj Kapoor for tricking her into singing "Main kya karun Ram mujhe buddha mil gaya" and refused to attend the premiere of Sangam. But see how beautifully she sang the cabaret song "Aa Jaane Ja" from Intakam, and this umfi one, "Bahon Mein Chale Aao," which Divya Ori will sing. बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, हाँ चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई नहीं करता, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। In 1962, Lataji became very unwell. Doctors were uncertain whether she would ever be able to sing again.
The family was worried. They knew that for Lataji, music was everything. It was her life. But as usual, Lataji herself was calm and only commented, if because of my illness, other singers get a chance, the industry will get new talent and I'll be happy. Thankfully, after 4 months, she recovered, and her first song after her illness was ओ ओ कहीं दीप चले कहीं दिल जरा देख ले आकर परवाने तेरी कौन सी है मंजिल कहीं दीप चले कहीं दिल ओ ओ It was rendered so hauntingly that it won her another Best Singer award. Before one could tell, years were flying past. Lataji devoted her life to taking care of her family, making them financially secure. Her only indulgence for herself were her 9 pet dogs and the gold anklets she wore. Otherwise, she dressed in simple white saris, enjoyed her perfumes, and later in life, her diamonds and emeralds. Those were happy times. Let's hear this beautiful song sung by Raka Behel. ये समा है ये प्यार था किसी के इंतजार था दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार था ये समा है ये प्यार था किसी के इंतजार था दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार था बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने ये समा है दीदार का किसी के इंतजार था दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार था Lataji composed for a few Marathi films under the name Anand Gun, and it was only when one of them won the state award and she had to go on stage to receive the Best Singer as well as the Best Music Director award that people realized that Anand Gun was none other than Lataji. With her brother Pandit Hridainath Mangeshkar, she produced Hindi film Lekin based on Tagore's short story, which won 5 national awards, including Best Female Playback Singer for her. Yet another award to add to the many she received, amongst others, the Dada Saheb Phalke Award, the Bharat Ratna, the Daughter of the Nation. Ironically, that young girl who did not attend even one single day of school was awarded doctorates by 8 prominent universities.
Her interest in photography and cooking and cars kept her busy. Cricket had always been a family passion. Whenever there was a cricket match, they would all take their picnic baskets, and Lataji would scream like a child when someone played well. In 1983, she and her brother organized a fundraiser and raised rupees 20 lakhs for the Indian cricket team when they won the World Cup. Her evergreen appeal lay in her ability to amend her style to suit the changing times. And apart from O.P. Nayyar, there wasn't a single composer for whom she did not sing, whether they were the stalwarts of the industry or new composers. From Hawa Mein Udta Jaye to Didi Tera Devar Divana to Jiya Jale, Jaan Jale, her voice never seemed to age. Apart from film songs in 36 languages, she also sang in outstanding non-film albums with Ghazal Maestro Jagjit Singh in Sajda, Meera Bhajans for her brother's album Chala Bahi Desh, and proving what Bade Ghulam Ali Khan had affectionately said about her, Kam bakhat kabhi besuri hi nahi hoti. She sang with the renowned classical singer Pandit Bhimsen Joshi in the album Ram Sham Gun Gan. But for her, the most special and emotional moment must have been when, in Yash Chopra's film Veer Zara, 30 years after Madan Mohanji's death, she again lent her voice to his tunes. He had passed away when he was only 51, and as his Rakhi sister, it was she who always emotionally supported his family. In fact, the wedding cards of all his 3 children went out as invitations in her name as head of Madan Mohanji's family. In 1974, she became the first playback singer to perform at the Royal Albert Hall, and this was followed by tours of America and Canada, which were sold out as soon as they were announced. In fact, the day she landed in Toronto during her 1985 tour, the city honored her by declaring it as Asia Day. During her long career, she saw India grow and evolve from pre-partition days to a modern, vibrant country. She was nominated to the Rajya Sabha and earned the respect and admiration of a long line of illustrious political leaders, right up to our current Prime Minister, Narendra Modi ji, with whom she shared a close relationship of mutual respect and warmth. We all saw his anguish and personal loss when, in spite of a hectic election campaign, he took time off to attend her funeral. And of course, we all know how her rendition of "Ae Mere Watan Ke Logo" moved Pandit Nehru to tears. Let's hear it from Isha Chauhan. वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद
याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Lata ji sang in many languages, but none of them can capture her artistry,
her hold over a nation, her sway over the listeners, her embodiment of the country's soul. No pen can adequately portray this symbol of national integration, this incarnation of the nation's fantasies, this repository of several generations' memories. In an interview, when asked where she would like her rebirth to be, she replied with her innocent, childlike laughter, not as Lata Mangeshkar for sure, but definitely in my beloved India. And I would like to be someone who does something for my great country, maybe as someone in the armed forces. What can one say in the face of such humility, said by someone who brought so much glory to our country and to the field of music? Such a person can never die. She has been taken into the fold of Ma Saraswati, but she will live through her songs, which will continue to thrill, motivate, and inspire us. She will be with us every step of our lives and for all time to come. As she sang, मेरी आवाज ही पहचान है, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे. How can we forget? घर याद रहे. She will always be with us. Good night and thank you. Thank you so much, Neelam and Ajay, for a wonderfully stitched program. That was just fabulous, Neelam and Ajay. Cannot thank you. I mean, this is beyond words, how beautifully rendered all of this was. And Nitinji, thank you so much for being part of the show. Your tribute was so heartfelt and so touching. It was like, it was hard for me to even express in words how close we were to tears and how deeply we felt the loss. I think it's something which this whole program has been so much more than one could have ever expected. And I think it was such a beautiful tribute that I cannot thank you all enough. And we look forward to seeing you all on our show again. I want to thank each and every Lutf singer. You were all par excellence. Neelamji, Ajay, what a beautifully choreographed, compared, researched program. Thank you from all of us at the Vasantya Club. Thank you again. Thank you so much. First of all, thank you, Raj, and thank you, Vinita. But our greater thanks to Neelam ji and to Mankotia ji for putting this program in such a good. You have really worked hard. You have really taken a lot of trouble to go through the history and the paces of Lata Mangeshkar. And I don't think any tribute that I've heard so far, I've heard many of her tributes on various television shows, but I think this surpasses all of them. Nobody has ever done a tribute like this, whether it is NDTV or whether it's India Today. I've heard all of these, but not a patch on what you've done today. And what a patch that you've been able to get Nitesh to come here and to be able to sing. Fantastic. Thank you so much. This is one of the finest programs we've ever had on a Zoom online program. And Raj, once again, thank you so much. And Vinita, once again, thank you so much. I never expected this to be such a great function. We just thought of Lata Mangeshkar and we thought of a tribute to her, but I never imagined that this can be of this level. Thank you so much, all of you who have participated in this. We really look forward to repeating similar program in live show. And I hope all of you will come to Vasant Vihar and share with us these wonderful moments of music. Thank you so much. I may I just would like mention to here add- that yes. towards the end of the Spring Fest, we have another show by the Lutf singers On the 26th. on 26th March. And there we would be remembering one of the greatest showmen of Bollywood, Raj Kapoor. So please Yes. do Thank you tune for in. putting that out, Raj. Sorry? I said thank you for reminding us of that, Raj. Yeah. So General Prasad said, hope to see you again. So there you are. In 3 weeks from now, we will have another program, and this time on Raj Kapoor. Thank you very Thank much. you so much, everybody, and have a night. Shubharatri. Thank you. Thank you. Thank you, Neelamji and Ajay again. Wonderful program. Thank you. Thank you.
Thank you so much. Thank you, Nitin ji. Neelam ji. Thank you Before so we much, go Nitin any ji. further, I think Thank we you. have to thank Nitin ji, who has made such a huge effort. Absolutely. And actually, you know, as he said, this is the first time he's spoken about this, and he's refused all TV channels and all other people who've been requesting him. And he's spoken from the heart. I have not been able to speak. I'm in tears. I don't know how he has been speaking and singing. So thank you so much, Nitinji. Thank God you, bless you. Nitin ji, Thank thank you, you Nitin. once again. Thank you once Thank again. you, sir. Thank you, sir. Thank you so kind. मेरा प्रोग्राम में रहे, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद. आपने आज शाम को रियली ट्रिब्यूट टू लता जी कर दिया. Thank you Thank you so so much. so much. So kind of you, sir. So kind of you. अब आपको Thank हम उम्मीद करते हैं बसंत प्यार अवश्य आएंगे. जरूर जब आप जब भी याद करेंगे जरूर हाजिर होंगे सर. Thank you, जी. Thank you. Thank you and good night, everybody. Good night. Good Good night. night. Thank you once again. Thank you.